ओम शांति। पहने भाई ओम शांति। ठंडा ठंडा बोलते हैं, क्या करें। ओम शांति। अच्छा ठीक बोला। ओम शांति। Om Shanti. पहने भाई ओम शांति। Om Shanti. ठंडा ठंडा बोलते हैं, क्या करें। ओम You are speaking very low. शांति। What to do? Om अच्छा ठीक Shanti. बोला। और कोई बताए जो योग पूरा होता फौरन चले जाते हैं। The one who are sitting far away, Dadi says that they very instantly go away. लाइफ है हमारी, But one should remember that it is a student life. हमारी स्टूडेंट लाइफ है। We are having our student life. स्टूडेंट लाइफ होने के कारण Because of we have the student life, स्टडी से प्यार है। we have love for the study, फिर संगठन में बैठ के and by sitting in the gathering, जो बाबा सिखा रहा है whatever Baba is teaching, वो रिवाइज करते हैं। we revise it. अपने आप अकेले नहीं इतना रिवाइज कर सकते हैं। You alone जितना cannot यहाँ रिवाइज revise as much as you can, but the place when you're here, so you can revise. कल जो बाबा ने बोला Yesterday, Baba spoke रिवाइज that you have to revise, रियलाइजेशन। only then you will have realization. पुरुषार्थ करना है। So you have to make effort. सच्चा पुरुषार्थी को So those who are true effort makers, रियलाइजेशन अच्छी होती है। they have a very good realization. तो यहाँ जगह पर ही है। ठीक है। तो हमारे बाबा ने अपना बना के Our Baba has made us belong to him मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी है। and have given the training of smiling. इसलिए And therefore, देवताओं का दर्शन करने से खुश हो जाते हैं। the people outside, they feel more happy when they take the glimpses of the deities in the temple. मैंने दादी को सुनाया I had explained to Dadi कभी देवताओं की पूजा नहीं की है, that I have never worshipped the idols of the कुमार deities. में पूजा नहीं की है, On the path of devotion, I have never worshipped. परंतु लक्ष्मी नारायण के मंदिर में However, दर्शन करना अच्छा लगता था। I used to feel very good when I used to go to the Lakshmi Narayan temple to take the glimpse of those deities. अभी हम दर्शनीय मूर्त बन रहे हैं। Now we are becoming the image of glimpses. दर्शनीय मूर्त Now we are the image of glimpse. ऐसी दृष्टि बदल रही है ना। Our drishti is automatically changing. अनुभव किया होगा कुंभ के मेले में जाकर And Dadi might have experienced by going to Kumbh Mela. साधु महात्माओं का दर्शन करने के लिए भीड़ मची हुई है। There is the crowd of meeting the sages and the saints over there. और अभी हम देवता बनने वाली आत्माएं Now we are the souls who are to become deities. ऐसा दर्शनीय मूर्त यहाँ जब याद में बैठते हैं Now we are the images of glimpses when we sit here in remembrance. जब भी याद में बैठते हैं Whenever we sit here in remembrance, तो हर एक अपने आप को देखे, you all have to look to yourselves. अपने को देखे या सबको देखे या बाबा You have to look to yourself, or you have to look to Baba, or you have to look here and there. So it's a really wonderful question. इनको देखते So I asked Dadi as, so what you people do? तीनों इकट्ठे है ना। All three is together. को बाबा की दृष्टि में देख
You have to see yourselves. You have to see Baba. फिर यहाँ सबको देखने नहीं बैठते हैं And we don't sit here actually to see everyone. मैं कौन हूँ मेरा कौन है वो दिखाई पड़ता है And it will be visible as who am I and to whom I belong to. मैं कौन हूँ मेरा कौन है Who am I and to whom I belong to. भावना है ना There is the inner feeling regarding this, is it not? And that is visible. And you have the experience of this. तो ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है ये फलाना है It is not just externally it is visible that this one is that one or this one. ये फिर मेरे मीठे बाबा की मुझे याद आती है But I remember नाम Baba's याद नहीं आता था sweet words. Baba never used to remember anyone's name. सुन नहीं आता था Really not. बच्चा यहाँ बैठी Baba always used to call my child, come here, my child, go there. So Baba never used to call anyone by their names. मेरा भी ये हाल हो गया है So now I'm also facing the same situation. I don't remember anyone's name, पर ये पापा का बच्चा है but I know these are Baba's children. तो अच्छी लगता है पापा का बच्चा है When I say that this one is Baba's child, जब पापा का बच्चा हूँ ना it is much better than I say the name of that soul. तो खुशी तभी होती है जब स्टूडेंट लाइफ है There is happiness only when you have the feeling that you are in student life. जब मैं ज्ञान मार्ग में आई किसने पूछा कब तक ये पढ़ेंगी When I came to the path of जवाब knowledge, क्या दिया होगा many asked me as, तुम्हारी पढ़ाई how कितनी long will you पढ़ाई पढ़ती study? हो? कब तक पढ़ेंगी How long will you जब तक study? जिएंगी तब तक I said, until I'm living. ताली तो बजाओ ना, जब तक जिएंगी At least you have to clap your hands for this. तभी मुझे पता था इतना समय जीना है Nobody knows until how long we will live, but for study, we have to live long. अच्छा लगता है जहाँ तक जीना है So I feel very happy to say this. Until we are alive, we have to study. फिर वो पढ़ाई से क्या हुआ So what happens after the study? ये Baba says, रिश्ता रूप you will attain your angelic stage. स्थिति अभी हो गई है फरिश्ते की कैसी होती है ऊपर रहते हैं How are the angels? Angels always stay up above. जब पहले छोटे हैं तो त्याग वृत्ति है When we are very young, we have the feeling कारोबार of में है sacrificing everything, renunciation. And when we indulge ourselves in any business, बुरा वृत्ति है then we are attached to some things. But when anyone is aged, then he has the feeling मेरा नहीं है of leaving त्याग everything. तो भाग्य से त्याग तो हो गया और जो छोड़ा तो छूट गए कोई बात पकड़ के So नहीं we बैठी, have तो liberated बैठो। everything. Nothing we have hold on to ourselves. जो आज बाबा ने Because of sacrificing, we have achieved our fortune. माया जी तो बने हो Just as today प्रकृति Baba की तरफ said, जाओ। you have become the conquerors of Maya, but now you have to become the conquerors of पानी की matter. नाटक दिखाएंगे नीचे पर होंगे पर हम क्या The water will show its own scene. There will be many upheavals. All the five elements will gradually बनना है ना take their अभी forms. तक तमो प्रधान था, They will छोड़ते bring नहीं है। upheavals. Now it is the Tamo-pradhan world. पर हम क्या कर रहे हैं But what we are now doing here, प्रकृति के मालिक है we are the masters of matter. तो उसमें याद आता है एक बात याद आती है So in this, regarding this, I remember one thing. Many years before, यानी एक जगह भाषण का प्रोग्राम था there was a program of giving lecture in abroad. तो अनायास से मेरे शब्द निकला And tirelessly, I spoke परमात्मा है out हमारी बाप परमात्मा है हमारा बाप that God is our Father ये माँ and matter is Mother. समझा ना?
परमात्मा है बाप, Supreme Father is our प्रकृति Father, है माँ, and matter is Mother. माँ धरती, अगर ये धरती न होती If this Mother तब Earth पाठ कहाँ बजाते, didn't live, then where would we play our part? If the sky was not there, तो कैसा होता, how it would be? ये पांच तत्व जो है ना प्रकृति के, The 5 elements of the matter, शरीर भी पांच तत्वों का है, because लोग ध्यान से the body is also made of 5 elements. शरीर भी पांच तत्वों का है। पहले पहले जो हम लेसन देते थे ना, Before, when we used to teach मैं lesson हूँ आत्मा, that I am a soul शरीर है पांच तत्वों का, and this body is made up of 5 elements. वायु अग्नि अंदर न होती है खाना कैसे पकता, So if there were no 5 elements, like if there is no fire, how the food being पांच cooked? तत्वों का शरीर है, पांच So if there is no water, what would we drink? तत्व की So likewise, there are 5 elements. So 5 elements, परमात्मा बाप है, they दूसरे play बाप their के घर own थोड़ी बैठ part. जाना है। The Supreme Father is our Father. He simply बाप और doesn't बाप के sit घर में above. पता चला, So we now know the introduction of our Father and the Supreme Abode. बाप कौन है, बाप का घर कौन सा, We know who is our Father ऐसे and प्रकृति which is the Father's में home. माया प्रवेश हो, Before we didn't knew, and therefore we came under the influence of Maya. आगे समझते नहीं थे माया क्या है, Earlier we didn't understand as what is Maya. प्रकृति अलग है पांच तत्व के, शरीर पे अलग, Matter माया is प्रवेश different. हुई है, Where Maya had माया existed, के पांच विकार है, Maya is 5 vices. प्रकृति के पांच तत्व, Matter is 5 elements. ये 10 कर्म इंद्रियां है, We are having the 10 sense पांच organs. ये है, पांच ये है, So 5 are the physical organs. कर्म इंद्रियां है। ये नॉलेज इतनी अच्छी है, And this knowledge is so wonderful. The more you go into the depth of knowledge, तो प्रकृति को भी जान लिया, माया को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया, that means you have known everything. You know about the matter, you know about Maya, you know about the Father, जो you know about the whole world. बनाया है, So Baba has now made us an instrument. ज्ञान को सारे दिन में So throughout the whole day, अच्छी तरह से I have nothing else but I just churn the ocean of knowledge. And if I don't churn the ocean of knowledge, I feel something is dry within me. अगर बाबा का काम बनना है, I have to use myself in Baba's task. अनुभव कोई बहन लिख करके मुझे दे के गई है, So some sister had written her own experiences and sent to Dadi. कहीं बैठी है, Is that sister sitting here? राधा का, या राधा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, एक मिनट यहाँ हो। उसको अभी जाना था, मैंने कहा क्लास करके जाओ, This sister, she would leave now, but I told her that she will share her experience and then leave. So now Dadi wants to know what she does, where she has come from. हाँ, वैसे मैं 8 बजे की बात बोलती हूँ, तुमको 8 बजे जाना है ना, हाँ, ऐसा सुनाओ, छोटी नहीं हो, छोटी नहीं हो, नहीं जो आज अनुभव लिख करके दिया है ना मुझे, सुनाओ सबको। So Dadi says that whatever experiences you have shared and written in the letter form, you just speak out. कहाँ है सुनने का? मधुबन में से नाम तो राधा है, My name is Radha. सेवा अर्थ इटली में रहते हैं For doing service, I stay in Italy. और अभी मधुबन का ऐसा 2-3 हफ्ते का ऐसा अनुभव, And I am having a very deep experience of staying in Madhuban from last 2-3 weeks, which I have not experienced in my last 25 years. तो स्वचिंतन, अपनी चिंतन को ऊंचा करना, So here, when we come, we have our own high self-realization to look to our own minds. जो आदत है पर चिंतन का या पर We have the very bad practice of thinking about others, but now it is the time to leave it. अभी ऐसी सच्ची सेवा, So this is the true service or the true effort which I am trying to do. पहले
पहले दिल्ली में जाएंगे कुछ दिन, For some days I'll be moving to Delhi, and after that छोटी I'll be moving to और जहाँ भी Italy. करती हो, सेंटर पर सेवा भी करती And Dadi says that she does service in the centers as well as does job. पूरा हुआ, बस हो गया। Dadi is asking her, is it complete? Is it over? परिचय दो कब से हो, कैसे बचपन रही, फिर कैसे इंडिया में आई, ये सारा परिचय दो। And it is told to give her introduction तो properly. बचपन से ही ज्ञान में है Since childhood I am in this knowledge. ना, 3 साल से When I was 3 years old. वैसे 18 साल तक तो दिल्ली में ही रहे। 18 years I stayed in Delhi, in India, पिता सब दिल्ली because my mother, my father all used to stay in Delhi. शायद कई लोग जानते होंगे लुइसा बहन, My mother's name is Sister Luisa, लिया था, and she had taken knowledge here. वहाँ तक ही रहे, स्कूल सारा वहाँ पर ही किया दिल्ली में। I did my schooling in Delhi, यूके में जाना हुआ, and after that I got the chance to move to UK, फिर सेंटर पे रहने लगे and then started staying in the center स्कॉटलैंड में। in Scotland. दादी ने इटली में भेजा, And then Dadi sent me to Italy, अभी इटली में 10 साल and from last 10 years I'm staying in Italy. सेवा भी करती है, जॉब भी करती She does a very good service as well as does job too. है, और क्या करती? And what else you do? मुझे जो पता है ना, अंदर की सफाई करने का इस बार जो पुरुषार्थ किया, अच्छा हिंदी में लिख करके दे दिया, मैंने समझा कि She had written all her feelings in the letter form, and she has cleansed herself, बात तो मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, and she has realized actually to whom I belong to and who am I. प्रदर्शन और प्रचिंतन, So instead of thinking about others, it makes one dirty. So instead of that, one should have self-realization. प्रचिंतन क्या बनाता है? सबको देखो, क्या देखो? What does thinking about others make you into? जो पहले पहले बोला, स्व को देखो, Look at yourself, see the Father, and then see everyone. पहले सबको देखेंगे, स्व If you को न first see देखेंगे, everyone, if you don't see yourself and the Father, then what will be the consequence? समझो कोई मुझे ऐसी कोई बात सुनाता था, For instance, if anybody speaks to me anything, तो मैं कहती थी मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ। and I would say that I'm not a dustbin. लंदन में रिवाज है ना, डस्टबिन में There is a custom in कोई भी London. बाहर नहीं फेंक सकता। Nothing rubbish can be spit outside. So everything should be put into the dustbin. So I myself am not a dustbin. कोई मेरे को कैसी If anybody will come and speak anything to me, I am not a dustbin to carry over. पकड़ा जाएगा। वो मुझे लंदन अच्छा इसलिए लगा, And that's why I feel that London is a very good place to stay in. डस्टबिन का सामान में डालते हैं, So the trucks will come, take the rubbish, and they go back. जलाते हैं, And they burn that rubbish. करते हैं। इतना So no rubbish is spilt over. ताकत ना हो कचरा फेंके। And no one has the power there on the street to throw the rubbish outside. तो जब पहले हम गए तो हमारे पास चूहा आने लगा। In the beginning, when I went there in London, में कभी चूहा आता नहीं। so the mouse came there in once in the kitchen. तो ये Never I have seen mouse in the kitchen there. जो इंडियन लोग खाना यहाँ वहाँ छोड़ते हैं, The Indians, they leave their food here and there, and therefore the mouse comes. चूहा आया माना हमारी इज्जत गई। Mouse comes means we are losing our honor. भंडारे में आया So in the kitchen it came, का इंडियन ऐसे होते हैं। and it was told that Indians are like this. I said, I'm not an Indian. तो अच्छी अच्छी बातें जो है ना, वो ग्रहण जहाँ भी जाओ अच्छी बातें ग्रहण करो ना। So wherever you go, you imbibe good things. By then you become good. बातें ग्रहण करने से अच्छा। So inculcate good things, you become good. ओके, Okay, now she is leaving to Delhi. Give drishti to everyone. लो So not give,
take drishti from everyone. Dadi says this. भाई ऐसे बच्चियां बाबा की बचपन से लेकर के So such are Baba's children. माँ स्कॉटलैंड में है, ये इटली में है, Her mother is in Italy. मुझे पता नहीं, भाई भी शायद है, Maybe she's having one brother. तो संबंध से न्यारे So these are two. बाबा के अभी They are very detached from their family. प्रेजेंट समय साकार बाबा की जो मुरलियां हैं ना, And at present time, इतनी अच्छी लग रही है, there are many Sakar Baba's Murlis तो प्रैक्टिकल में that has to be revised very nicely. बाबा ने जो कहा है, And practically I see कराची में थे हम, that when I was in Karachi, घर छोड़ने का, and when we had the part of leaving the home and the family, जब यहाँ आए हैं and when we came to Bharat, कमल फूल समान बन, Baba first taught the lesson to become कितने कमल फूल समान like बनने के lotus flower. How many of you have become like lotus? प्रैक्टिकल ऐसे की है, साकार में की है, So practically Baba taught us as how to lead a life like lotus. इसकी माँ भी वंडरफुल है, And this one's sister, this one's mother is also wonderful. प्रवृत्ति में है, They are living in the पता family. है इसको भाई भी है, पर I know this one is also having a जानते नहीं brother, है। Sister Louise. कोई फिर परिवार वाले हैं तो भी कमल फूल समान, They have their own family relationship, everyone, but still they are detached from their families. And therefore everyone should acquire this stage. Only then you will become free from bondages and attain the stage of liberation. प्रैक्टिकली वो भी इस मिसाल चाहिए, So practically one should become an example like this. उतना जो The more you become an example, बाबा को एक बारी बाबा को कहा साकार को, तो मैंने कहा बाबा, बाबा दृष्टि दे रहा था, I once said Baba, and Baba was giving me drishti. I said, Baba, बाबा मैं क्या करूं, Baba, what shall I do? क्या क्या करना है तेरे को, And Baba asked me, what do you मैंने want to कहा, do? सपूत पर सबूत देना है, I said, I want to become sweet and give proof of my sweetness. सबूत देना These are the things which I am speaking when I stayed in Karachi. The words which I spoke in front of Baba, I have never forgotten that. ऐसे ऐसे जो शब्द है भगवान के आगे हमने, So whatever words we have spoken in front of God or God spoke in front of us, उसके बीच में और कोई आ नहीं सकता, in between no one else can enter. आवे ना तो वो भी ऐसा बन जावे, Even if they enter, they will also become like that. मुझे इंटरफियर नहीं कर सकता है, No one can interfere me. इंटरफियर अक्षर इंग्लिश है, The word interfere is an English word. तो फियर पैदा होता है, So if there is any interference, then there is fear. कोई एंटर Did you understand? अभी अरुण में चेंज देख रही हूँ, Now I am seeing change in Brother Arun. देख रही हूँ ना, अंदर कोई चला जाता है, कोई भी बात चली जाती If है, anything goes deep inside, then there is fear. Then there is worry. जहाँ जनता और वो ये क्या फियर है, डर है, Where there is fear and worry, कभी खुशी होगी क्या उसको, will there be any happiness? नहीं, No. तो भगवान ने जो खुशी दी है ना, कहता है खुशी बांटो, The happiness which God has given us, God says that you have to distribute that happiness. बुलाओ, हाँ, और हमारे लक्ष्मण भाई को बुलाओ, I feel that I have to call my brother Bhatnagar and brother Lakshman. Both are wonderful brothers. शुरू हुई है कानपुर से, So from Kanpur, Delhi, the service has begun. फिर पुणे में आया है, And from then, Brother Bhatnagar took course and followed this path. तक है कभी मैदान में, And from वंडरफुल ड्रामा है, wonderful that day drama till है, today, बाबा के is wonderful going on बच्चे भी well. And these ऐसे are very wonderful जो Baba's एक को children. देख प्रेरणा मिले, So you should become such that by looking at you, the others would be inspired. बाबा जैसे प्रेर रहा है, तो मैंने कहा बाबा आप कहते थे बाबा प्रेरता नहीं है, बाबा समझाता है, It is not that Baba sitting in up above and करने के लिए प्रेर giving touching, but Baba is also inspiring us to do. कर रहा है प्रेरणा,
Baba is not forcing anything, but Baba is inspiring. जैसे बाबा प्रेर रहा है, It is as though Baba inspiring to make effort. Get up, now do this. Get up, now do that. So this is what Baba is inspiring. ऐसे नहीं है साधारण करते भी मैं खुश रहूं, It is not that I am doing something ordinary and I am happy, मिलेंगे, and those will not get any inspiration from Baba. भले कितना भी करे, No matter how much you do, you be happy with yourself, but Baba is not happy with you. प्रेरणा मिलेंगे सब। So will anybody get any inspiration from them? Nothing. ऐसी लाइफ बनाना कोई काम की नहीं है। That kind of life is useless, worthless. काम का बच्चा बाबा का हो ना, तो समझे मैं बाबा के काम का बच्चा हूँ, तो वो मुझे पहले I have to be the worthy child of God. जैसे ये बार की Only through me, then God will inspire others to do that. बैठी थी, मैं क्लास में चलना, भले जाना है ट्रेन में जाना, I told that Sister Louise who came to my cottage to give a letter that you have to come to the class and share your experience. So why I'm calling each and every person here on the stage, because only through them you will get some idea and experiences, and you will have more interest in doing service. छोटी होकर के इतनी सेवा करती है, She is very young. She does a lot of service. नाम नीलाम या कोई बात बताना जरूरी नहीं है, It is not necessary that I have to say all this. थोड़ा भी है, But if there is a little body consciousness and don't do service, he will be unable to do any kind of service. If you are कई प्रकार detached from body consciousness, then you can do any kind of service. आओ भटनगर आओ, So now I invite Brother Bhatnagar, Brother Lakshman for 5 minutes, and very nicely you share your experience. होता है वंडरफुल है लक्ष्मण भाई। Brother Lakshman is also wonderful. अपना परिचय भी दो, प्रेजेंस में क्या Dadi tells them to give their introduction and at the present time what they are doing and what aim they have as what they have to become. In short, बताऊंगा। आज कल हमारे प्रेम प्रकाश भाई यहाँ बैठता था, कभी शरीर त्याग किया, you all know Brother Prem Prakash. You may know or may not know. He's the younger brother of Brother Bhatnagar, who was suffering from lung problem, and from last 2 months he was admitted in the hospital, and yesterday in the evening at 4 o'clock he left his mortal coil. Now the brother speaks that my name is popular by everyone calling me as R.S. Bhatnagar. इसका नाम क्या पता नहीं है, राम स्वरूप, R.S. means Ram Swarup Bhatnagar. 50 साल से जानती हूँ, 50 साल से ना, हाँ। मुझे ज्ञान में आए हुए लगभग 55 साल हो गए हैं। जैसे दादी जी ने बताया, मैं पहले कानपुर में I am from last 65 years in this knowledge. और उसी समय ज्ञान As Dadi said earlier that the service began from Kanpur in Delhi. I was the child at that time who came to the path of knowledge. बस ये बता दूं कि वहाँ पहले जैसे आजकल बीके का बोलबाला है, सभी जानते हैं, गली गली में सेंटर है। Nowadays we are having the centers of BKs in each and every lane. But at that time no one knew what is BK and what are Brahma Kumaris. एक दिन क्या है कि कुछ So one day, कुछ माताएं जा रही थी, some mothers wearing white dress, they were बीके walking on the street. जारी होते हैं, तो मैंने कहा शायद हो ना हो ये शायद बीके हैं और शायद सेंटर पर जा रही हूँ। And I thought for myself that these are BKs and going to the centers. पीछे
बिल्डिंग में किसी बिल्डिंग में and they entered to some of the building, बोर्ड भी नहीं and there was no board earlier, it was not mentioned. ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी फर्स्ट फ्लोर के They ऊपर मैं went भी up फर्स्ट the फ्लोर के ऊपर stairs. चढ़ा I too followed देखा them, कि दादी जानकी जी का and I क्लास saw Dadi Janki was giving class, and that was the first meeting with Dadi Janki. दादी जानकी जी से मुलाकात के बाद दादी जानकी ने मुझे बताया After meeting Dadi Janki, she told me बाबा मधुबन से that मम्मा भी आने वाली after 3-4 days, Baba will be coming in Madhuban. So I will make you to meet बहुत him. बड़ी लॉटरी मिल So I got a very big lottery suddenly. पाया मैंने पहले दादी जान So as soon as I met Dadi Janki, और मामा से मुलाकात हुई I met Mama, आया बाबा से and after that I came here, I met Baba, करके अपने चैम्बर में बैठा करके बहुत सी and Baba called me to his chamber and spoke to me very sweetly. I felt very good. I was filled with zeal and enthusiasm. बात के ऊपर कि मैं जो इन संस्था के हेड हैं वो मेरे से बात कर रहे हैं मुझे And I had this feeling that I am talking to the head of this institution. ये डिसीजन When I was talking to Mama, भी दादी जैसा बनना and I had the instant thought that I have to become like Dadi. और आज दिन तक मैं And every day I never miss Murli. 55 साल हो गए हैं And from last 65 years I have never missed a single class. ये रहा मेरा प्राचीन पहले का अनुभव This is my first experience. ज्ञान में आते ही मैंने अपने परिवार वालों As soon as I came to the knowledge, सुना हुआ था पढ़ा हुआ था चैरिटी बिगिंस एट होम I had learned the English proverb that charity begins at home. थोड़ा लिमिटेड होम तो मेरी मैं और मेरे युगल लेकिन जहाँ हमारा परिवार है भाई I and my है, वो भी मेरा Mrs. is staying together. वहाँ से शुरू करना है वो तो शुरू चैरिटी बिगिंस हमारी मैं और So I always had the feeling that the charity begins at home. So I call all my family members. सेवाएं की उनमें से प्रेम प्रकाश भाई I gave them the knowledge, and that was my younger brother, Brother Prem Prakash, who was deeply involved in this knowledge, and he was a really my quality soul, a very बात है good soul. समाचार सुना And you all heard his news that he has left his mortal coil yesterday in the evening. मैं ये अपनी जो ज्ञान अमृत प्रेस है And at the present time, काम करता हूँ I am doing service in Gyanamrit Bhavan. बतौर I am the associate editor for एज World Renewal magazine. एडिटर मैं उसमें संपादक के तौर पे काम करता हूँ और जितनी भी हमारे वो निकलते हैं बिल्कुल हम ये हमेशा हमारा ये लक्ष्य रहता है From the day it has started until now, I have continued to do this service. और इतने अच्छी जो सारी दुनिया के अंदर इनकी जो And I engage myself in the proofreading of the World Renewal magazine every month, पाठक बने और पढ़े ये इस लक्ष्य by which this magazine is been circulating worldwide. 81 के करीब है 81 मुझे रियली वंडर लगता है लोगों को वंडर लगता है कहते आप 81 के तो लगते नहीं आप तो बहुत छोटे लगते हो So Dadi asked him as what age are you now? So he says I'm 81. बड़ा है आप छोटे लगते हो तो ये है दादी का प्रताप है मैं दादी को हमेशा फॉलो करता हूँ बाबा को बाप दादा को और दादी को मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ दादी हमेशा यंग है बिल्कुल I always follow Baba and Dadi, and Dadi is also very young like me. मेरे आगे So I also follow Dadi. फॉलो करने के लिए और फिर मैं बाकी ये जो आजकल मैंने बताया कि मैं ज्ञानामृत भवन में हूँ और मैं अपने अभी जब से कुछ मैं यहाँ आया हूँ मैं कभी भी छुट्टी पे मैं अपने लौकिक घर में कभी नहीं जाता हूँ और यही लक्ष्य रखा है कि यहाँ रहते हुए From the day I'm here, I have never went and met my family members or relatives in Delhi. कभी कम ना हो और हम इसी I'm always present here. My zeal and enthusiasm दादा के is always hats off, बाप दादा and whatever aim Baba has kept on me and what Baba wishes, I will definitely fulfill that. And this is my aim. ओम शांति Om Shanti.
Om Shanti. अच्छा लगता है ना तुमको सुनना? अच्छा है ना? Dadi is asking, you all feel very good to have the chit chat of the experiences, is it not? साकार बाबा So रात्रि Sakar का Baba used to sit at night कहता है, बच्चे को to share the experiences, and Baba used to say, children, anybody can share your experience so that others will get inspirations from that. शरीर का नाम लक्ष्मण भाई है। The name of सभी this मुझे costume जानते हैं, पर मैं सबको नाम से नहीं जानता, शक्ल is से जानता Brother Lakshman. I know everyone by face. जो बैठे हैं राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हैं। वैसे तो हमारा आपस में भाई भाई तो हैं ही, लेकिन नाम से भी The other brother says that I am Ram and he is Lakshman. जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो भटनागर भाई और मैं एक ही कॉलोनी में रहते थे। When I shifted myself here, me and Bhatnagar was staying in the same colony. जब से मैं यहाँ शांतिवन में आया हूँ, From the day I have come to करीब Shantivan, 16-17 साल से यहाँ रहना शुरू from किया। last 16-17 years I have started staying here. 26 साल से हूँ। From last 26 years I'm on this path of knowledge, and I have taken knowledge from London. ये एक अनुभव की बात बताता हूँ कैसे I am sharing my ज्ञान में experience मैं कैसे आया। as how I came to this knowledge. एक दिन अचानक ही Once, संडे का दिन था suddenly it was a Sunday, और मेरी युगल का और दोनों का प्रोग्राम था कि बच्चे सो जाएंगे, संडे को हम लेट नाइट फिल्म देखेंगे। and we had the plan to see the late night मैं films. 10 बजे की न्यूज सुनने लग गया और I was ITV की न्यूज जो है पौना listening घंटा चलती है। to the news, वो कहने लगी मुझे तो नींद आई है, आप and my wife said that I am getting फिल्म sleep, देख लेना। so you alone sit and see the film. उस ITV की न्यूज के बीच में जो है When I was listening to the IQ news, in between मैं बाथरूम चला there are the advertisement, and in between I went to bathroom, and after I came from bathroom I read the literature. I brought that literature to me. वो 7 दिन की सप्ताह कोर्स की किताब It was the literature of 7 days course. जो न्यूज खत्म हुए As soon as the किताब पढ़नी शुरू news कर दी। got over, I started reading the literature. The TV was working on its own way, and I didn't know that. The whole day स्टेशन स्टूडियो बंद हो गया। I started reading the literature, मैंने कहा ये अलार्म कहाँ से बजने लगा। and I thought for myself as from where the alarm is स्टूडियो sounding में प्रोग्राम itself. खत्म हो जाता है तो टीवी अलार्म की तरह बजता है। मैंने उसको ऑफ किया। I switched off the TV and started continuing reading. रात मैंने वो किताब पढ़ी। The whole night I read that literature. सवेरे जब बच्चों के स्कूल का टाइम हुआ, And early in the morning, when it was time to leave the children to the school, मैं तो उन बच्चों को स्कूल में तैयार करके ले गई, मैं सो गया। Sister Kamlesh, she took the children to the school, and I slept. दूसरे दिन फिर जो है रात को मैंने इसी तरह The किया। second is the same thing I did. तो 2 रात में मैंने जो है 7 दिन का कोर्स जो है 2 nights I took to complete the 7 days course एक through the ही point literature. मुझे समझ में नहीं आया। Only one point I didn't understand ये 84वां जन्म about the 84 birth. और हमारी टीचर बहन थोड़ा मोटे तरीके से पढ़ाती And our teacher used to teach us in a very gross बस का form, भी एक्सप्लेन करना नहीं रहा। and she had no other लेकिन मधुबन में explanation. जाओगे तो बाबा से पूछ Then she told me that you go to Madhuban and ask Baba directly. पूछता था गहराई वाला तो वो कहती थी बाबा से पूछ। So whenever I used to ask my teacher as please tell me this point in depth, she used to always tell me go to Baba and ask directly from him. तो मधुबन में बाबा के कमरे में गया। I came to Madhuban, I went to Baba's room in Madhuban, and I asked Baba about the 84 birth. स्पष्ट बताया। Then Baba very clearly explained. बाबा ने एग्जाम्पल दे के बताया। Baba gave me an बाबा मेरे example. सामने जो है ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए। Brahma Baba, it was as if that Brahma Baba stood in front of me, उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे स्कूल and में he बच्चा explained, जाता just as the children go to the school, है, तो बच्चे को पहले दिन से पता चल जाता है ये मेरा from the टीचर first है। day the children will come to know that this one is my teacher, and the teacher will understand this one is my student. तो वो स्टूडेंट पैदा हो गया टीचर के मन में भी
और स्टूडेंट के मन में पैदा हो ये टीचर The student came to know about the teacher, and the teacher came to know about the student. And in the same way, Brahma Baba said that this is your 84 birth of yours. So this was of full clarity. की गुंडी साफ हो गई। उसके अलावा एक बात का जवाब मुझे कोई भी नहीं दे सका। Other than this, there was one more question for which no one could give me the answer. I would see one scene. बच्चा है छोटा सा, There is a small child. He's very beautiful. इधर उड़ जाता है, इधर उड़ जाता है। Whenever I see to him, he flies from here to there, from there to here. से पूछा तो वो कहने लगी कुछ नहीं। I asked my teacher, she said से nothing. पूछा तो कहती है कुछ नहीं। And when I asked Sister Jayanti, she said, you don't जो मुझे दिखाई दे रहा है think उसे about भूल that, जाओ, you जो forget दिखाई about नहीं दे रहा, that. उसे तू कह रही है स्वीकार कर ले। So then others also told to me that whatever you're seeing, you're not thinking about that, and what you're not seeing, you're thinking about that. And I went to Dadi. बाकी कहती तुम मधुबन जाना। And Dadi said, you go to Madhuban. I said, okay. उसी दिन ही मधुबन की डेट्स आई थी और मधुबन के And लिए the same day I got the dates of बाद ही Madhuban. छुट्टी मिली। And after 4 months, I got permission to go to Madhuban. बाबा से पूछा I asked ये Baba, scene जो मुझे as the दिखाई scene which देता has है been बचपन से, visible ये क्या since है? my childhood, what is this scene all about? बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारा ही देव रूप है। Then Baba said, child, this is your own deity तुम्हारे form. में देवताओं वाली क्वालिटीज आती जाएंगी। The more you have the deity qualities in you, the more this will be more clearly visible in front of you. उसके अलावा एक अनुभव और, And after that, I got one more दादी experience. को मालूम है कि मैं भारत में 5 साल रहा हूँ अकेला। Dadi says that Dadi knows that I stay in Bharat alone खेत के अंदर सांप था for last 5 years, and there was one field nearby my home where I was staying in Bharat. पानी नहीं देता था। So there was a snake roaming here and there, and that place didn't give any water. And somebody said that if there is water and if the land becomes wet, snake comes from deep from the soil. पानी दिया, बिल से निकला और ऐसे मेरी तरफ देख रहा है। मैं बैठ And the snake started seeing at me. मैंने उसे दृष्टि दी। I gave the drishti to snake. मैंने कहा देवराज I said, oh the नागराज, deity, यहाँ से आप चले जाओ। you please leave now. ये अब आपका खेत नहीं है, This is not your field. मेरे मालिक का खेत This is the field of my master. और आप यहाँ से जाइए। So you please leave from मैंने here. कहा बाबा Then I said, इस Baba, नागराज को कहो कि यहाँ से अपना you प्रस्थान tell the snake that he will leave from दिन मैं here. मधुबन आ गया। The second day I came to Madhuban. हफ्ते के बाद मैं गया। After the week I went there खेतों back, की देखभाल करता था, भागा and भागा the आया, one who बाबूजी, was the बाबूजी, gardener क्या there, बात है? he came running towards me, काला नाग चला गया वहाँ and से। he told me that that black snake has gone away. आपको कैसे पता? I asked him, how do you मैंने know? उसे रास्ते में देखा है। He said that I have seen in between the उस roads. क्यारे में पानी दे, मैं देखता हूँ सांप निकलता है या नहीं। So then I thought for myself that I will pour water to the land and let me see if it comes or not. So it didn't come. So whose wonder is this? This is Baba's तो wonder. ऐसे हर एक ब्राह्मण को है। So likewise, there are many experiences which are to be shared. का कोर्स नहीं कर सकता, So these are the experiences. सेंटर में नहीं जा सकता, और बिना It is not only gained only by taking 7 days course. घंटी बजा रही है बहन। And फिर कभी जो है the brother says, now stop. कि बाबा को कई बार कहता हूँ, Sister Hansa is saying to stop me. So likewise, सब बातें जो है टच करा के बुलवाता है, बाबा तू मुझे क्यों Baba नहीं बुलाता? touches Dadi what to speak. Om Shanti.